Now we'll be taking new chapter, that is capacitors. New chapter is capacitors. Now, what is capacitance? Now, as different container have different capacity. Now, suppose you have one container is this one, and this is second container. These are two containers. So, which container has more capacity? Anybody can tell? Among these two, second container has more capacity. How will you determine? Pour equal amount of water in both. 5 liter of water in this, 5 liter of water in this, same amount of water you are pouring. The water rises up to here in this, whereas in this water will rise up to this level. So the container which has more capacity, in that level of water is less, and the one having less capacity, there the level of water will be more. Same way, now if you are given two conductors, this is conductor 1 and this is conductor 2. Now which one has more capacitance? Capacitance here for the case of conductor, it will be charge storing capacity. कितना ज़्यादा ये charge store करेगा, that is determined by the capacitance. How much charge it will be storing. The charge storing capacity of conductor, that is capacitance. Now you can tell whether conductor 1 will have more capacitance or conductor 2 will have more capacitance. Yes, anyone? Which conductor has more capacitance? Now you cannot say whether one will have more capacitance or second will have more capacitance. In this case, what you do, give same amount of charge to both conductor. 10 coulomb to this and 10 coulomb to this. You have given same amount of charge, and when you will give charge, potential will rise. Suppose rise in potential is 5 volt, and here the rise in potential is 20 volt. So the one in which rise in potential is less will have more capacitance, and the one having rise in potential more will have less capacitance. जो पर्पज यहाँ पर लेवल वाटर का लेवल सॉल्व कर रहा है, यहाँ पे पोटेंशियल सॉल्व करेगा वही पर्पज. जिस कंडक्टर में पोटेंशियल में राइज कम होगा उसका कैपेसिटेंस ज्यादा होगा, मतलब इट हैज मोर कैपेसिटेंस, इट कैन स्टोर some more charge, but here capacitance will be less. So this will have high capacitance and this will have low capacitance. So write down capacitance of conductor. Capacitance of the conductor is the ratio of charge given to the conductor to the rise in potential. सर एक बार फिर से बोल दीजिए, नेटवर्क नहीं आ रहा है सही से. Capacitance of conductor is the ratio of charge given to the conductor to the rise
in its potential. जो चार्ज दिया है और जो उसका राइज इन पोटेंशियल हो रहा है उसके रेशियो को कैपेसिटेंस बोलते हैं. कैपेसिटेंस इज रेशियो ऑफ चार्ज गिवन टू द कंडक्टर टू राइज इन इट्स पोटेंशियल. So this capacitance is equal to, that will denote by C. It is the ratio of charge given to the rise in potential. This is the basic formula for the capacitance. This is charge given to the conductor and this V is rise in potential. When conductor is given charge, its potential goes on rising. So on giving charge, whatever potential rises, इनका ratio जो है that will determine the capacitance of the conductor. SI unit charge की कूलम and rise in potential की volt, कूलम per volt. And 1 coulomb per volt is 1 farad. So farad is the SI unit of capacitance. Farad जो है, this is the SI unit of capacitance. Smaller units में microfarad and picofarad will be used. On giving same charge, Q constant कर लो. To different conductors you are giving same charge, Q constant है, तो C inversely proportional to V. तो lesser rise in potential, more capacitance. Now if you plot the graph between charge given to the conductor and rise in potential, क्योंकि ये जो Q है this is proportional to V. किसी भी कंडक्टर को as you give more and more charge, its potential goes on rising. चार्ज देते जाओ पोटेंशियल राइज होता जाएगा. ये फॉर्मूला तुमने पढ़ा होगा, 1/4πε0 Q/R. So this Q will be equal to constant into V. यही constant जो है यहाँ पे कैपेसिटेंस था, तो ये बहुत फ्रीक्वेंटली यूज होगा. Q proportional to V, graph will be a straight line. Q proportional to V, क्योंकि वोल्टेज का फॉर्मूला तुमने पढ़ा था, स्फेरिकल कंडक्टर के वोल्टेज का भी लास्ट टर्म पे बताया था, 1/4πε0 Q/R. More and more charge you give, more rise in potential. तो Q proportional to V. ग्राफ स्ट्रेट लाइन आएगा and slope of QV graph will give capacitance of the conductor. QV का जो स्लोप है, तो कि स्लोप निकालोगे तो परपेंडिकुलर तुम्हारा Q हो गया और बेस B हो गया. तो स्लोप ऑफ QV ग्राफ will give capacitance of the conductor. Write down one question. One question write down. A capacitor
when charged to 1000 volt, comma, takes 2 microcoulomb of charge. Find capacity of the capacitor. Find capacity of the capacitor. Very simple question. Charge to 1000 volt. V given है 1000 volt. 2 microcoulomb of charge. Q is 2 microcoulomb. माइक्रो 10 पावर माइनस 6 कूलम और कैपेसिटेंस फाइंड करना है तो C इज इक्वल टू क्यू बाई वी अप्लाई कर दो 2 इंटू 10 पावर माइनस 6 अपॉन 1000 2 इंटू 10 पावर माइनस 9 फेरेट. तो कैपेसिटेंस ऑफ दिस कैपेसिटर इज 2 इंटू 10 पावर माइनस 9 फेरेट. Next question. Among two conductors A and B, which will have more capacitance? ये दो कंडक्टर्स के लिए ग्राफ दे रखा है. यू हैव टू टेल विच वन हैज मोर कैपेसिटेंस. यस, विच कंडक्टर विल हैव मोर कैपेसिटेंस? एनीबडी? यस, स्पीक लाउडली. विच वन? B or A? Now here it will not be A because I have changed the graph axis. Here when you will find the slope you will be getting V by Q, so 1 by C. So here capacitance of B is more. Capacitance of B greater than capacitance of A. और अगर ग्राफ ये दिया होता Q वर्सेस B का, this is for A and this is for B, then capacitance of A greater than capacitance of B. किसी को प्रॉब्लम? एनी प्रॉब्लम? Yes, no? No. Then next heading. Capacitance of an isolated spherical conductor. Capacitance of an isolated spherical conductor. We will find the capacitance of an isolated spherical conductor. Isolated means no other conductor is present nearby it. You are given a spherical conductor and no other conductor is present nearby it. Then it will be an isolated spherical conductor. Now you are given this spherical conductor having radius r, and when you will give the charge q,
it will be uniformly distributing over its surface and this charge will be stored by the conductor. इसकी कैपेसिटेंस फाइंड करनी है और बेसिक फॉर्मूला कैपेसिटेंस का होता है Q by V. Q is the charge given and V is the rise in potential. जब चार्ज तुमने नहीं दिया था तो इसका पोटेंशियल 0 था और चार्ज देने के बाद इसका पोटेंशियल हो जाएगा. तो जितना फाइनल पोटेंशियल होगा वही राइज इन पोटेंशियल होगा. सो राइट डाउन, कंसीडर an isolated spherical conductor of radius r placed in air. Full stop. When charge Q is given to the conductor, then this charge uniformly distributes over its surface and is stored by the conductor. So this is a spherical conductor, radius r. अभी इसका कोई पोटेंशियल नहीं होगा. Once you give the charge uniformly distributes and is stored by the conductor and potential rises. तो rise in potential of the conductor, जो कंडक्टर के पोटेंशियल में राइज होगा, पिछले टर्म पे बताया था व्हाट इज द पोटेंशियल एट द सरफेस ऑफ स्फीयर, दैट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q by R. ये फाइनल पोटेंशियल भी होगा और ये राइज भी पोटेंशियल में होगा बिकॉज इनिशियल पोटेंशियल बिफोर गिविंग द चार्ज वाज 0. राइज इन पोटेंशियल आ गया, कैपेसिटेंस निकालना है. एज कैपेसिटेंस इज Q by V, Q और V की वैल्यू रख दो, ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q by R. Q कैंसिल आउट और ये पूरा ऊपर चला जाएगा. 4 पाई एप्सिलॉन नॉट This is the formula for capacitance of isolated spherical conductor situated in air. अगर isolated spherical conductor air में situated है, then this will be the formula for capacitance. And remember here 4 pi epsilon naught की वैल्यू जो लोगे 1/9 into 10 to the power 9 लोगे. तुम्हें पेपर में गिवन होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इज 9 into 10⁹. इसकी जगह पे लोगे 1/9 into 10⁹. तो आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर दिया है, उसका कैपेसिटेंस फाइंड करना है. ये फॉर्मूला लगा दो, आंसर आ जाएगा. नेक्स्ट लाइन राइट डाउन. If this isolated spherical conductor is
placed in a medium of dielectric constant K, now if this conductor is placed in a medium of dielectric constant K, let us suppose water में place कर दिया या कहीं place कर दिया, then capacitance will be 4 pi epsilon naught K into R. हमेशा K जो है वो एप्सिलॉन नॉट के साथ आएगा, K की वैल्यू एप्सिलॉन नॉट के साथ. That means on placing in medium, capacitance will increase by K times. एयर में इतना है और मीडियम में K टाइम्स बढ़ गया ये. सो एक पॉइंट लिख लो, when isolated spherical conductor is placed in medium of dielectric constant K, then its capacitance will increase by K times. जैसे पहले कैपेसिटेंस जो था आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर का वो 10 माइक्रोकूलम था और उसको वाटर में प्लेस किया गया जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 80 है, तो नया कैपेसिटेंस उस कंडक्टर का हो जाएगा 80 इंटू 10, दैट इज 800 माइक्रोफेरेड. फर्दर 2 को 1 से डिवाइड कर दो, 2 डिवाइडेड बाय 1 Cm अपॉन C, Cm की वैल्यू और C की वैल्यू, ये R कैंसिल, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Cm अपॉन C K के इक्वल.